Good afternoon. You're watching the breaking news show right here on CNN News 18. My name is Toya Singh. We're actually starting the show with breaking news we've got coming in regarding the Gyanvapi Mosque complex, with the Supreme Court allowing the Archaeological Survey of India survey to continue at the Gyanvapi site. The Supreme Court bench that's headed by the CJI, the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, that said that having regard to the nature and the ambit of the court, the appointed commissioner and the safeguards placed by the High Court were unable to interfere with the order. The Supreme Court says that non-invasive techniques shall be used during this survey. This is the update that we've got coming in. Remember, yesterday the Anjuman Intizamiya Mosque Committee had finally filed their plea before the top court. They were challenging the Allahabad High Court, which is what the Supreme Court has referred to in their order. They were challenging the Allahabad High Court's order, which had rejected its petition against the Varanasi District Court directive permitting the ASI to carry out the survey of the Gyanvapi Mosque. We'll bring you more context, but remember, the High Court single judge bench with the Chief Justice had termed the Varanasi District Court order for a survey on the disputed premises as just and proper. Let's go to my colleague Siddhant to understand more in terms of details when it comes to what the Supreme Court has just said. Siddhant, over to you. Bring us context, please. Well, yes, that's right. So it's a green signal for ASI scientific survey. This is what Ananya is reporting from the Supreme Court. At the same time, SC bench headed by CJI, D.Y. Chandrachud, says, and I quote, that having regard to nature and ambit of the court, appointed commissioner and safeguard placed by High Court, we are unable to interfere with the order. Now, SC has clearly said that the non-invasive techniques shall be used during the survey. Perhaps this was the assurance also which ASI teams gave to the Allahabad High Court, that there is not going to be any sort of invasion or damage to the structure, and the same was assured to the court by the lawyers of the UP government. So Justice Chandrachud has once again reiterated that there should not be any damage to the structure, or non-invasive techniques should be used. At the same time, a very interesting demand has come from the Muslim side, saying that the report of this survey should not be made public. It should be given to the in a sealed envelope. This is what the Muslim side has said. Now, Ananya is saying that the discussions are right now underway. What SC has to say with regard to making the report public. SC has, okay, fine. Ananya has now given us this input that SC has refused Muslim side's demand for keeping the report in sealed cover. So now this report, which is going to be filed in a week's time in the High Court, will be made public. So there is no objection, or perhaps the Supreme Court has refused Muslim side's appeal to keep the report private or in a sealed envelope. So a very big, orders coming from the Supreme Court. This is perhaps the second time that Muslim side has moved the Supreme Court for relief or to put a stay on the overall exercise which is going on at Gyanvapi Mosque, and second time also. ये एविडेंस में डिसाइड होगा, और जो उनकी 7/11 की पेटिशन है उस पर डिटेल्ड आर्गुमेंट्स आगे किए जाएंगे, पर कोर्ट ने आज की डेट में सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये बहुत स्पष्ट है, और इसमें आपके जितने एप्लीकेशंस हैं अंजुमन इंतजामिया के वो ऑलरेडी टेकन केयर हैं। सर्वे में कोई एक्सकेवेशन नहीं होने वाला है, स्ट्रक्चर में कोई डैमेज नहीं होने वाला है, और इसलिए सर्वे नहीं रुकेगा। यानी कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट का भरोसा लिया है। एएसआई के डायरेक्टर ने जो एफिडेविट दिया था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, उस एफिडेविट पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी भरोसा जताया है, और यही कहा है कि एएसआई जो है हमेशा मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जानी जाती है, इसलिए एएसआई वहां पे डैमेज या डिस्ट्रॉय करेगी ऐसा नहीं। आपकी कौन सी दलीलें थी जो मुस्लिम पक्षकारों पर भारी पड़ी और कोर्ट को आपने? देखिए, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, जो सर्वे की एक्सरसाइज है बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए करी जाएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और वहां पे कोई एक्सकेवेशन नहीं होगा, ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात है। तीसरी बात, जो हमारी लीगल रिसर्च थी कि ऑर्डर 26 रूल 10A में सीपीसी के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा आदेश पारित कर सकती है, और एएसआई इस देश की प्रीमियम और एक्सपर्ट बॉडी है। इन सारे तर्कों और तथ्यों के आधार पर मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया, और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को अपहोल्ड किया है। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, आज हमने कोर्ट के सामने यही बात रखी कि धार्मिक स्वरूप क्या है,
ये एविडेंस में तय होगा, क्योंकि हमारा केस ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद हम बराबर वहां पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इसलिए धार्मिक स्वरूप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार है वो किसके पक्ष में लागू होगा ये एविडेंस में देखा जाएगा, और यही सारी बातें हमने कोर्ट में रखी। तो आज बहुत एक इम्पोर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सर्वे पे कोई रोक नहीं है। सर्वे जैसे उन्होंने सीलबंद लिफाफे में बोला था, नहीं, मुस्लिम वो पक्ष ने कहा कि हमें इसको सीलबंद में रखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी, और उसके बाद वो रिपोर्ट सब्जेक्ट टू फर्दर स्क्रूटनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, सारी चीजें हो सकती हैं। कोर्ट शुरू से ये कह रहा था कि सर्वे में कोई हर्जा नहीं है और सर्वे किया जा सकता है। देखिए, मैं भी ये तो फाइनल हियरिंग में तय होगा, अदालत तय करेगी कि क्या। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ये बड़ा कितना मददगार साबित होगा सर्वे का मामला। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है, और वहाँ पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। जिला अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निर्धारित समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? नहीं, देखिए, कोई निर्धारित समय नहीं दिया। ऑलरेडी वो जिला अदालत में मैटर पेंडिंग है। आज हमारी एप्लीकेशन जिला अदालत में फाइल हो गई है और हमने 15 दिन का और समय मांगा है, जिस आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी अपना फैसला। कितने दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा उम्मीद? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे 15-20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पर ये सिर्फ एक टेंटेटिव गैस है मेरा। इसको मतलब कोई फाइनल वर्डिक्ट मत समझिएगा, स्टेटमेंट मत समझिएगा। पहले जिला अदालत ने एक समय दिया था, क्या आप? पर जिला अदालत का जो समय था वो स्टे की वजह से खत्म हो गया, तो आज हमने जिला अदालत में दोबारा एप्लीकेशन मूव की है और फर्दर जिला अदालत से एक्सटेंशन का टाइम मांगा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है, हम उनसे बात करते हैं। एक सेकंड भैया, एक मिनट रुको। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है, हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। All right, let's bring you a little bit of context. There was the lawyer, the counsel for the Hindu side in this entire case. We'll have my colleague Ananya joining us in just a second. This is a decades-old litigation around the mosque that has gained momentum over the last year. This is after 5 Hindu women sought the right to worship the Ma Shringar Gauri on the outer wall of the mosque complex. The matter has since moved from a magistrate court to a district court to the Allahabad High Court and then to the Supreme Court and then actually back to the district court and the High Court. So it's actually gone from court to court, as you can see. We'll have my colleague, our legal correspondent Ananya Bhanagar, with us in just a second to lay out the timeline for us. It's in fact the Supreme Court had said that this case would be looked at by the Allahabad High Court, and after the Allahabad High Court had gone ahead and passed its judgment in which it had allowed the Gyanvapi Mosque survey to continue, it's after that that you'd had the Muslim side file this plea at the Supreme Court.